सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान बड़े ज़ोर शोर से, आपको पता है कि टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है और वहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है डैलस, और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। वहाँ पे इस साल हमने डिसाइड किया कि अवार्ड नाइट की तकरीब की जाए। यह हर साल लॉस एंजल्स में होती है और इस साल हमने इसको मूव किया है डैलस में। ये हमारा एक नया तजर्बा है। अब मुझे उम्मीद है कि हम इस तजर्बे में कामयाब होंगे, और अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो दूसरे शहरों में भी हम सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट को लेकर जाएंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह भरपूर और मालूमाती है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स शामिल हैं और आज हमने एक स्पेशल रिपोर्ट इसमें ऐड की है, अमेरिकन मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल। ये एक अदारा है जो अरसे दराज से चल रहा था, लेकिन अब ये बूम पर है और इसमें काफ़ी ख़वातीन जो हैं शामिल हो रही हैं लॉस एंजलिस की और वेस्ट कोस्ट में। और ये एक तकरीब हुई थी जिसको डेफिनेटली इन ख़वातीन ने बड़ी मेहनत से और बड़े डेडिकेटेड से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और इसकी रूह रवां हैं ऑफ कोर्स अनिला, और वो इसकी सरबराह भी हैं। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़वातीन का भी एक रोल है और ख़वातीन ही पहली गोद होती है जहाँ से एक बच्चे की तरबियत का आगाज़ होता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, उनकी राह में रुकावटें ना डाली जाएँ, उनको अदब एहतराम से देखा जाए और उनको मौक़िफ़ फ़राहम किए जाएँ, उनको मौक़े दिए जाएँ ताकि वो भी आगे बढ़ें और आपका साथ दें। तो आज ये रिपोर्ट इस प्रोग्राम में शामिल है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप एंजॉय करेंगे और बड़ी मालूमाती है। इसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और इम्पॉर्टेंट लोगों ने इसमें शिरकत की है लॉस एंजलिस से, और बिला किसी ताख़ीर के आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वो लम्हा आप पहुंचा है जिसका आपको इंतज़ार था। तेरी
गल करनी ओ अस तेरी गल करनी ये डैडी नाल बस तेरी गल करनी ये डैडी नाल बस तेरी गल करनी ये डैडी नाल बस तेरी गल करनी ओ वो लम्हा आ पहुंचा है जिसका आप सबको इंतजार था। सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट 2012। मलबाबरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे उड़ने लगा क्यों मलबाबरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे और पिया है उस्ताद दिलशाद खान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड विनर वायलिनिस्ट। सब कुछ DFW मैरियट होटल, ब्रोथ हफ्ता मई 19, 2012। हमें आपका इंतजार रहेगा। रीमा जी बताइए कि माशाल्लाह वैसे तो अमेरिका में आपकी कभी काफ़ी पذीराई हो रही है और बड़ा आपको लोग पसंद कर रहे हैं। द वे यू टॉक, द वे यू मीट विद द पीपल एंड आपकी जो है अदायगी, मिलनसारी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और अब आप सफ़ीर पाकिस्तान की जो अवार्ड नाइट है उसमें आपको बहुत ही बड़ा एजाज़ दिया जा रहा है डैलस के अंदर। टेक्सास जो है सबसे बड़ी स्टेट है अमेरिका की, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी डैलस के लिए और टेक्सास की कम्युनिटी के लिए? क्या पैगाम आपका? सबसे पहले तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान और उनकी पूरी टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इस अवार्ड के हवाले से मेरे नाम का इंतखाब किया। बहुत खुशी है और अपनी खुशी अपने अल्फाज में मैं अभी बयान नहीं कर सकती। ये जब मैं अवार्ड लूँगी तो डेफिनेटली मैं अपनी तमाम खुशियों को आप सबके साथ शेयर करूँगी। और टेक्सास के जितने लोग हैं उन सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा सलाम। आप लोगों ने जितनी मोहब्बत से मुझे वेलकम कहा है अमेरिका के अंदर, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए भी मेरे पास आई थिंक अल्फाज कम पड़ जाएंगे। तो आप सबसे मिलने के लिए मैं टेक्सास आ रही हूँ और इसका मेरे आने का जो क्रेडिट है वो सफ़ीर पाकिस्तान को जाता है कि जो इतनी खूबसूरत शाम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं खूबसूरत टेक्सास के अंदर, जहाँ पर हम सबको मिल बैठने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 19 तारीख को सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड सेरेमनी।
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. I wanted to thank you all for joining us today at the second annual American Muslim Women's Empowerment Conference. It's not easy being an American Muslim woman in today's world due to the perception that the media has created about us. 43% of Muslim women hold college degrees, as compared to 29% of general American women. That's quite a big difference. That tells you a lot about us. And it tells you that, yes, we are empowered. With that said, I would like to invite upon stage one of the most empowered women that I know of. Well, Anila, please come join us. Everybody, please give Anila a big hand. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning, brothers, sisters, and friends. It was a year ago that we stood in front of you with a truly united, one single voice of the American Muslim woman. This year, again, history is being repeated. Muslim women from different parts of the US are arriving, and they are coming here to show solidarity of purpose. They're also coming here to take back ideas and to take it to their communities and share those ideas. But what is clearly evident today is that the American Muslim woman wants a voice. She wants a forum. She wants to sit with other women and discuss issues of importance and learn from the mainstream American community. Muslim women do face, as Faryal noted in the beginning, we face a lot more challenges than men as we go out and work. We look for work and we work. We have to face a lot of discrimination and many challenges. So without further ado, we bring to you, ladies and gentlemen, the second annual Muslim American Women's Empowerment Conference. Our first guest today is a lady by the name of Beth Crom. We have come a long way. This year is the 100th anniversary of women having the right to vote in California, something that predated women having the right to vote in the United States of America. We have come a long way. At the end of the day, we are one community. We are here to help a community, the community of Muslim women, understand how to access your own power, how to leverage your own experience, how to make your own connections, how to celebrate your own uniqueness. But you are connected to a world of women. And I have to say that it is the ability to nurture, the ability to connect, to understand, to share, to see the universal themes that drive all of our lives, to have universal aspirations for our children and for our communities, to understand joy and to understand pain. If you could all please welcome Chief Mike Downing. Thank you. My passion is public service, is building partnerships, and building trust in communities, because we all know that's where the real strength comes from. And thank you to the American Muslim Women's Empowerment Council
for your initiative, for your dedication, for your commitment. We need more women to emerge in leadership positions, just as you have. What a great example for women. How countries treat women, the policies, the laws, the practice of protecting women and providing equal rights is probably the most important indicator of a country's success. And I wish you much success, and we look forward to the continued partnership. I was there last year, I'm here this year, and I'll be here next year. Thank you so much. An organization that does so much for women that suffer from domestic violence. Please welcome Sheila Mehta on stage from Sahara. It's amazing how many women call after they have suffered at least 5 to 10 times at the hand of the abusers. How many of you know what is historically going on right now in Congress? It's a renewal of Women Against Violence Act, folks. Everybody's voting on that, okay? It was started in 90s, and now it's here for renewal. And thanks to this country and the lawyers and the Congress and the House of Representatives and the presidents, that we do have an act that helps us to fight against violence. Next, I would like to invite one of the first ever Asian women ever voted to Congress. She has been a great friend of ours, and please welcome on stage with a big applause, Judy Chu. You had the first American Muslim Women's Empowerment Conference ever. You got hundreds of Muslim American women to learn the issues, to know their rights, and to know that they could do something about it. Now you're doing this conference again, and I know that you are inspiring hundreds of women to greater empowerment. With your efforts, Muslim American women will never accept being second-class citizens. I think it's so great that you did this conference, and I want to show appreciation to the council that made this happen, the American Muslim Women's Empowerment Council. I would like to invite our next guest speaker. He will be speaking about minority rights in Islam, and his name is Mufti Suleiman Hashim. The concept in Islam about the women and the men, both of their rights. We have a lot of talks going about, and everyone's giving their opinion. But what does actually Islam talk about? If we look at different cultures, different ethnicity in America, when people come from all over the world and they make America their homes, they come with a lot of their traditions and cultures with them. And unfortunately, a lot of these cultures and ideas, it does not come from the religion of Islam. It comes from the culture. It is a time now to come together and work together so we can build a good a community which represents Islam as a way of life. I would like to invite Renee Wickman up on stage to speak a few words with us. Renee? I've listened to and have known the statistics on violence against women, young women. I worked for the San Bernardino County Sexual Assault Services. So I'm very, very familiar with violence among women. I would like to encourage Muslim women in America to join and support the African American community. And you don't need to reinvent the wheel. I would like to say to you that through the civil rights, and we have had a long history of Muslims and Islam in our community, many years and generations back. Our African American men have embraced
Islam and transferred and taught it to African American women. Fatma will be speaking to us about Zanbil art. She will also introduce our next speaker, who is our literary speaker. I've been promoting South Asian art, particularly Pakistani art in Southern California, since more than 20 years. In 2007, I founded Zanbil Art, which is a non-profit South Asian art organization. Nafisa Haji has employed themes of family, religion, lingual diversity, sectarian and national divisions to establish herself as an advocate of humanitarianism and peace. And I was thinking about the name of your council, American Muslim Women Empowerment. I can't think of putting any other words together that would cause as much controversy, and that's a sad indication of the state of the world that we live in. When there is a gender imbalance of power in a society, everybody suffers. So when we're talking about women's empowerment, this is not a women's issue. It's wonderful that so many women are here and interested in this topic. More men should be here, because you're not doing us a favor when we talk about women's rights. We're doing everyone a favor when we're talking about women's rights. All of society benefits. So as mothers, as brothers, as sisters of brothers, as mothers of sons, as daughters of fathers, it's something to bear in mind. It's not about one versus the other. It's about the balance. And so when we write books and we write stories and we tell those stories, let's invite the boys into the room instead of shutting them out. Please welcome Sheriff Lee Baca. Thank you. We need to start relationships in a better way. There's generally an attraction factor that gets things started. And I think the eyes have more to say to the brain than sometimes even logic when people meet. Empowerment is, in terms of a marriage, is the ultimate ability of an opportunity for the male to empower the woman to be as powerful as she can be. That's what empowerment is. It's to have that ability as a woman to choose happily for what you want to do, because you know your husband is not going to stand in the way of your choice. And my advice to any man who feels threatened by a powerful woman is that the more you empower a woman, the more she will be in love with you. Next up, I would like to call journalist from the LA Times, reporter Mona Shadia. Thank you. You know, we hear about all these domestic violence and violence against women by so-called Muslim men or the Muslim culture or the Middle Eastern culture. And there are a lot of programs and a lot of efforts, a lot of great programs and efforts and mosques who are working to empower women. But we often forget that our own religion, Islam, has empowered women more than 1,400 years ago. Next, I would like to invite Jihad Turk up on stage. Culture is sometimes so powerful that it overwhelms what we know to be right. And so what we have to do is create a culture in our country, here in the United States, and in our extended ummah that values and gives awe for women, that has reverence for women. Next, I would like to invite Steve Martinez. I thought that this was an incredibly courageous endeavor, and I'll be honest with you, after having had that conversation, I wasn't overly optimistic that she would be able to garner the support to pull it off. Well, look around the room, and this is an incredible testament to Anila and all of the board and all of you who have taken the time to gather and deal with such important issues. It just really demonstrates to me an amount of courage that you just don't see in society today. Next, I would like to call upon stage for our closing remarks one of our council members, Nikki Gardar. When there is a happy person, that makes a happy couple. A happy couple makes a happy family, and the happy family creates a happy society. And the change has to be made by you. If you always do
what you always did. You will always get what you always got. So the choice is yours. Thank you. I think this is a very good program. Good job, all the committee. मेरा ख्याल है बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये. Everything was perfect और बहुत ज़रूरी है हमारी मुस्लिम ख़वातीन के लिए, मुस्लिम माशरे के लिए ऐसी चीज़ों में आना और लर्न करना. और This program was very helpful. It shows all the women's rights, and it really does help reach out to our community very much. I found the conference to be exceptionally invigorating, educating, and uplifting. आज की कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत अच्छी गई और बहुत अच्छी है, लेकिन जो बात मैं बताना चाहूँगा, it was not in my wild imagination that so much work with so many people to empower women. बिल्कुल समीर ने जैसे बताया है कि इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क, इवन इंक्लूडिंग यू टू, और हम सबको चाहिए कि इसमें हम लोग सब मिलके जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प करो. प्रोग्राम बड़ा अच्छा था. I think this is something we need to do more on a regular basis and bring more people to have panel discussions. This is the best thing for us to do to create awareness, and I'm so delighted to be here today. We are part of this event today about Muslim women, especially issues that are being faced by a lot of the Muslim women or Pakistani women when they are in America. We're very excited anytime that we can encourage women to take control of so many things like politics. Politics is important. The issues that politicians move forward, in particular for the families. We're very excited. We had a wonderful conference today. We had over 500 women join us from all over the United States. Everybody is having a great time, and I wanted to thank everybody who's here in time to attend the conference. I'm very excited about next year. Hope to get a bigger crowd next year. I think it's a great day, and we are looking forward for rest of the events going on. The purpose or the passionates of the women, I think, going to come true. And the bazaar has been very successful, and the whole, all in all, it really reflects the empowerment of women. We are very thankful to all the people who attended today, and we had a lot of officials who came, and our breakout sessions were very successful. The conference was planned to educate and outreach to the community, and there are many issues related to women that needs to be addressed, and hopefully American Muslim Women Empowerment Council will take a step forward and address these issues and make sure that these issues are properly addressed. नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट प्रोग्राम लोकल ग्लोबल. नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में हमने शामिल की एक रिपोर्ट शिकागो इलिनॉइस से और एक रिपोर्ट न्यू जर्सी से और कुछ छोटी मोटी खबरें इधर उधर की आज के प्रोग्राम में शामिल हैं. नाज़रीन, जैसा हम जानते हैं कि अपना एक बड़ा मुस्तहकम अदारा है और आजकल बड़े ज़ोर शोर से वहाँ पे इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं और समर मीटिंग की भी तैयारी हो रही है वाशिंगटन DC में. और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी हमेशा की तरह मीटिंग कामयाबी से हम किनार होगी. और इस साल की सदर हैं साइमा ज़फ़र, जो बड़ी मेहनत से लगन से काम कर रही हैं ताकि ये इनका प्रोग्राम कामयाबी से हम किनार हो. और हमारी सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे. नाज़रीन, मेरा शिकागो जाना हुआ था और वहाँ पे हमने एक रिपोर्ट मरतब की है वहाँ के चैप्टर की. और इससे पहले भी हम कई बार शिकागो जा चुके हैं. और जैसा हम जानते हैं कि आजकल इलेक्शन की भी ज़ोर शोर है, जिसमें 3 कैंडिडेट बड़े ज़ोर शोर से अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें जनाब डॉक्टर असद कमर कार्डियोलॉजिस्ट फ्राम फ्लोरिडा, जनाब इकबाल परवेज़ साहब न्यूयॉर्क, जनाब आसिर रहमान साहब न्यूयॉर्क शामिल हैं. और वो भी शिकागो में मौजूद थे और उन्हें अपने ख्यालात का इजहार भी किया. वो भी हम आप तक लेकर आएंगे. नाज़रीन, हम जानते हैं कि अपना कि चैप्टर्स अलमनाई बहुत मेहनत से लगन से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से रह के अपने गरीब मुल्क पाकिस्तान की कुछ मदद कर सकें और आने वाले उन तलबा को जो यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी भी मदद करना चाहते हैं. इस सिलसिले में सफ़ीर पाकिस्तान ने बेइंतहा प्रोग्राम किए हैं और हमेशा अपना के शाना बशाना सफ़ीर पाकिस्तान चलता आ रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा अगर ताउन बरकरार रहा. तो नाज़रीन, आइए देखते हैं ये एक मुख्तसर रिपोर्ट शिकागो से. मुराद फरमाइए.
President of the Pakistani Descent Physician Society for 2012. Pakistan Physician Society is the oldest chapter of APNA, now in existence for more than 30 years. In the last few years, we made great strides. The Executive Council set 3 goals for itself: strengthen the PPS organization, strengthen our established program of PPS APNA Clinic, and envision an expanding services of the APNA Clinic by starting a mobile clinic before the end of this year. Now we have Dr. Imtiaz Arain, who is the chair of the clinic committee. I think this is one project that every president, this is becoming a new mission for APNA to serve community here in United States. We have been doing a lot of work. As you know, APNA has been doing work overseas with flood relief and earthquakes. But I think, as I say, the charity starts at home. Dr. Mahmood Khan, who's our keynote speaker today. Dr. Khan is the CEO and Chief Scientific Officer for PepsiCo. But I spoke about 4 months ago at the annual meeting of the United Nations at one of the high-level meetings of the UN. And the topic there that I was asked to speak about was global food security, global economic challenges, and what's happening amongst our cities around the world. We in the US will have to get used to a new world order. That's given. As India and China start to pull their proportionate right to services, food, energy, raw materials, prices will go up. As they go up, commodities will go up. Supply and demand. As that happens, we're going to have to innovate in a very different way. We're going to have to think about our global presence in a different way, ultimately doing business in a different way, and providing services in a bit different way. Today we have the honor of introducing 3 candidates who are running for the APNA President-elect 2013 position. I'll give you a couple of tangible plans that I have for APNA, should I get elected. I certainly would like to build a flagship hospital in Pakistan, a hospital which will raise the bar of how medicine is practiced in Pakistan, both in the government as well as the private sectors. I think this particular institution should work through a network of rural health centers, and certainly should have a nursing school and a medical school affiliated with it. And I think I'm not thinking too big when I say that we can certainly create a chain of healthcare organizations here in the United States, like the Adventist or the Baptist. There is nothing stopping us from doing it. Beyond this, I would mention that recently I had the pleasure of meeting with the President of the United States in person, and I was taken aback at his statements, very candid statements about the lack of involvement of Pakistani Americans in political lobbying and fundraising and networking and moving forward through the process. And I think that is something that we really need to pay a lot of attention to through our organizations that we work through, since we ourselves cannot directly do that through APNA. I think there has to be a positive exploitation of media. APNA needs to become a branded name, and we must certainly raise a voice, a strong voice of moderation, and condemn violence and extremism in the world, and thus promote sanctity for human life. I think these are some of the tangible goals. There are other things that I could talk about, but I'll take a moment to talk about your responsibilities as voters. I get a chuckle out of it every time I ask somebody and they say, "Oh, I'm so sorry, Asad, if you would have just come to me a few months ago, I've already made a commitment with somebody." So it seems to me that we make commitments to people without actually giving all of the candidates a fair chance and getting to know them. I would be the first person to state that if there is somebody in this hall who has made a commitment to me and tonight finds the ideas and thoughts and goals of another candidate certainly better than mine, I will bow my head and I will ask you to please support that person. Please do what's best for APNA, and please go home and think about it for a couple of minutes. This kind of
philosophy about friendship, about, handshaking, about helping each other out is great. We'll still remain friends. But please don't vote for me if you think I'm not the right person. Thank you very much. With great humility, I have few objectives I'd like to present. I want to undertake if I'm elected as President of Apna 2013, President-elect. First of all, greatly increase the number of the membership. Under my leadership, New York chapter grew from a mere 60 members to 400 members over the period of last 2 years. I want to bring that same thing to the New York, to the Central Apna also. Second thing, transparency, accountability. My request to you, please, read the trader's report recently released. It will tell you that $181,000 vanished into thin air last year. It would not take place. It would not take place if there's transparency and accountability in our organization. Number 3, paying back to our country, as Dr. Mahmood said. There has to be a parallel system of social welfare in our country, poor country like that. When I went to medical school, my fee for the whole year was 300 rupees. 300 rupees, which is equal to $300. $3. So it is imperative upon us to pay back to that country, which gave us education almost free. Since September 11, the image of our ethnicity and our religion is tarnished because of extremism, and Apna can play such a fundamental role. Apna is such an important foundation that, as Dr. Khan said, and as PPS is doing, not for to get the vote of Dr. Imtiaz, but I think what your chapter is doing, that model should be given to all the chapter, and all the chapters should be doing the free clinic. This is how we're going to clean the image of not only Apna, but all the Pakistani physicians in this country. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं जनाब वसीम काजी साहब. He is a president of Apna chapters, and today is a very good meeting taking place here in a convention center in Chicago, which is the greatest city. Lot of Pakistani live here. और माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. और आज डॉक्टर साहब कुछ बात करते हैं. इन्होंने फ्री क्लिनिक बनाए हैं, और अमेरिका में फ्री क्लिनिक जो है वो उनकी अपने गवर्नमेंट की भी नहीं है, इनके अपने इदारों की भी नहीं है. ये पहला ऐसा मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट है जो बहुत से पाकिस्तानी फिजिशियन कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट में. लेकिन ये जो उन्होंने बनाया ये एक यूनिक है. आइए इनसे बातचीत करते हैं. डॉक्टर साहब, ये आज वो क्या रहा है, आपके चैप्टर की मीटिंग है, ये PPS क्या है? आई नो अपना Pakistan Physician Society is the oldest chapter of Apna. Actually, it was started even before Apna. Apna started after all these local chapters merged about 30 years ago. We need to give back to the society. At that point, we decided that the best thing we can do is what we can donate our profession. As I mentioned in my speech, this is the zakat of our profession. तो आइए देखते हैं ये फिरोजन फूड और शाहनवाज की रिपोर्ट न्यू जर्सी से, जिसको लाए हमारे लिए जहांगीर लोधी. मुलादा फरमाइए. तो आइए पूछते हैं कि शाहनवाज रेस्टोरेंट में इनकी क्या मसरूफियत है. जी, यहाँ पर हमारा मेन काम जो है, हमसे वीकेंड पे खोलते हैं, ओपन करते हैं पब्लिक के लिए. और जो सबसे पॉपुलर चीज़ हमारी यहाँ पर है वो हमारा ब्रंच है. ब्रंच जो है एक बहुत ही मशहूर है, और ये पूरा एरिया आप देखा कि सारा से फूड लगाते हैं. तकरीबन 60-70 किस्म के खाने होते हैं यहाँ पे, हर किस्म के. और यहाँ माशाल्लाह से पूरा मेला लगा होता है वीकेंड के ऊपर, सैटरडे एंड संडे के दिन. तो बुफे में कितनी आइटम्स होती हैं? आइटम माशाल्लाह 50-60 से ज़्यादा आइटम होते हैं. हर दफ़ा उसको बढ़ाते रहते हैं, गिनना मुश्किल होता है, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद करते हैं. इनके के आप हर किस्म के आइटम जिसे आप पसंद कर, यानी कि जो होता है वो आप खा सकते हैं. कि गोलगप्पे या खाने हैं, हलवा पूरी खानी है आपको, आपके जो चाइनीज़ आपको खाने का दिल चाहता है, या आपने निहारी खाना है, हलीम खानी है, बिरयानी है, कौरमा है, यानी कि आप फ़िश होता है, लेग ऑफ लैम है. किस किस्म के कई ऐसे आइटम है कि जो कि किसी न किसी को कोई ना कोई चीज़ बहुत स्पेशल लगती है और पसंद आती है.
ये भी एक हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि जब भी कोई न्यू जर्सी आता है पाकिस्तान से, ख़ास तौर के ऊपर किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, चाहे उसका शो बिज़नेस से हो या कोई आपके कोई रिलीजियस हो, वो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई उनको लेकर आता है। अभी लास्ट वीक जैसे यहाँ पे जमशेद जुनैद आए हुए हैं, मोइन अख्तर साहब यहाँ पे कई दफ़ा आ चुके हैं और उन्होंने बहुत पसंद किया था, जब भी आए मेरे खाने यहाँ पे पसंद किए हैं। अब हम लोगों के पास ये यहाँ पे बैंक्वेट हॉल और ये रेस्टोरेंट काफ़ी सालों से है और लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे खाने आते हैं और हमें काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो इसके लिए हम हर जगह तो अपनी ब्रांचेज़ नहीं खोल सकते, तो इसके लिए इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये फ्रोज़न प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, जो इसको अभी मार्केट में माशाल्लाह से 4-5 साल हो गए हैं और इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके अंदर कई किस्म के आइटम हैं हमारे, जैसे जो लोग घरों में आसानी से नहीं बना सकते हैं, जैसे कि बारबेक्यू के आइटम्स होते हैं। यहाँ पे सर्दियाँ आपको पता है ज़्यादा होती हैं, तो लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर हमारे कबाब्स हैं, इसमें सीख कबाब हैं, चिकन के हैं, लैम के हैं, बीफ के हैं और शामी कबाब हैं, चपली कबाब हैं, बिरयानी है, चिकन समोसे। तो ये हम आइटम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। अभी हमने चिकन बिहारी कबाब को रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि बहुत पॉपुलर है इस वक्त हमारे यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में भी, और उम्मीद करते हैं कि ये लोग दुकानों में भी ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। तो इसमें यह कि बिल्कुल ये फ्रेशनेस होती है, रेडी टू ईट होता है। सबसे ख़ास बात ये आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, और कोई बहुत ही कन्वीनियंटली है। जब भी आपके पास कोई पार्टी हो, जब भी आपके को दिल चाहे खाने का, उसको तो उठाया आपने, माइक्रो में गर्म किया और खा लिया। तो इसलिए इसमें लोगों के लिए ये बहुत आसानी है। इसमें आपने ये शाहनवाज फूड जो है, फ्रोज़न फूड, ये इंट्रोड्यूस करवाने का आपने क्यों सोचा और आपको क्यों ख्याल आया? उसकी यही 2 रीज़न जो मैंने आपको बताया, मेन यही थी कि एक तो हमारे खाने की काफ़ी डिमांड थी, लोगों को पसंद था इसके, तो हर जगह पे आप ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। तो एक तो ये था। तो उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ पे अब जो है वर्किंग पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर वाइफ भी और हस्बैंड भी काम करते हैं और वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये देसी खाने जो है बना सके। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और पॉसिबल नहीं होता है। ख़ास तौर के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये लोग खास तौर लेते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, और ये घरों की दावतों के अंदर ये बहुत हमने सुना है, काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि लोगों ने हमारे प्रोडक्ट लिए और दावत के अंदर उसमें जो है बड़ी बड़ी दावतों में इसमें गर्म करके दिए हैं, तो इसके अंदर वही टेस्ट आता है जिस तरह आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट आता है। जी, ये प्रोडक्ट जो है ये लोगों के से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें पता नहीं है बता दें कि ये एक USDA यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो इसको मॉनिटर करता है। और इसलिए आप लोगों को उस लिहाज से बहुत तसल्ली रहनी चाहिए कि ये जो चीज़ है ये किसी आम जगह पे या आम से रेस्टोरेंट्स में नहीं बना रहे हैं। ये पूरा USDA का प्लांट होता है, जो कि बहुत ही हाइजीनिक होता है, और इसलिए आप लोगों को बिल्कुल बेफिक्र होकर आंख बंद करके आप ये चीज़ ले सकते हैं कि ये हाइजीनिक बनी हुई है। और उनका फुल उनका मॉनिटर करते हैं हर चीज़ में, उसकी प्रोडक्ट के अंदर उसकी जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें मेक श्योर करते हैं कि वो क्लीन हो और हर चीज़ प्योर हो उसमें। जी, यही इसमें ख़ास बात है कि एक एक जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं, यानी कि जो भी हम उसमें मसाले हैं, जो भी कुछ है, उसको लॉक करना पड़ता है कि ये कहाँ से आई है, उसकी ओरिजिनिटी कहाँ पर है, कोई चीज़ किस फॉर्म से आई है उस, और किस डेट के ऊपर ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इस तरीके से उसका पूरा जो है रिकॉर्ड होता है कि कभी हम इसे ट्रेस करना चाहें तो ईज़िली ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होती है उसका पूरा में लॉग होता है, उसके अंदर हर बॉक्स के ऊपर जो है वो एक्सपायरेशन डेट होती है, कोड होता है, जिसकी वजह से कि अगर कभी कोई रिकॉल हो तो उसे ईज़िली किया जा सके। एक गाइडलाइंस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और मेरी वाइफ हैं जो उनको सुपरविजन करती हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में उसमें काफ़ी जो है रिसर्च की है उसमें, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स कोशिश करते हैं कि पूरा करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसी आज हम यहाँ पर न्यू जर्सी के अंदर एक हलाल फूड फैक्ट्री है, शाहनवाज फूड फैक्ट्री, उसमें मौजूद हैं। और शाहनवाज फूड फैक्ट्री के ऑनर नादिर खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम लोग ने ये एक जो है शुरू किया है सिलसिला, जो कि हलाल की यहाँ पे बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जो हमारे देसी खाने हों, जिसके अंदर के यहाँ पे लोग आराम से लोग घरों में रख सकें और जब चाहें उसको ज़रूरत के वक्त निकालें और खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कई प्रोडक्ट शुरू किए हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत इसका कामयाब है। इसमें सबसे जैसे हमारा मेन आइटम हमारा कहलाता है चिकन सीख कबाब है, चिकन चपली कबाब है, चिकन शामी कबाब हैं। इसके अलावा जो है हमने जो है यहाँ पर
बिरयानी भी शुरू हमने की हुई है, चिकन की बिरयानी निकालते हैं। इसके अलावा अभी हमने नए आइटम शुरू किए हैं, चिकन बिहारी कबाब और चिकन टिक्का। तो ये मेन इनका ये है कि लोग जो कहते हैं कि ये हमें कन्वीनियंट इसका बहुत है, और दूर दराज इलाक़ों में लोग रहते हैं या इनके पास टाइम नहीं होता है जाके कहीं फ्रेश लेके आएँ या बनाएं, तो ये आप उसी वक्त फौरी तौर पे फ्रीज़र से निकालें, फिर गर्म करें माइक्रोवेव में और खा लें। तो ये नादिर भाई, ये बिल्कुल फ्रेश फूड होता है और इसकी कितनी मियाद होती है, कितना टाइम होता है कि ये आप जब बनाने के बाद मार्केट करते हैं तो कितने टाइम तक ये जो यूज़ किया जा सकता है, इसका जायका सही रहता है? जिस पे हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, और इसमें ये लोगों ने भी इसके ऊपर काफ़ी इसके ऊपर अच्छा तासुर दिया है कि वैसे तो इसकी लाइफ 1 साल तक की होती है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि आप जब भी इसको यानी कि माइक्रोवेव से निकाले गर्म करें, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको फ्रेश है। तो इसमें हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं और काफ़ी तजुर्बे करने के बाद ये इसकी क्वालिटी इस तरह मेनटेन की है हमने। तो इसमें ये चिकन सीख कबाब है, यहाँ पर आपके पास जो है ये चिकन समोसा है, इसके अलावा कोई बिरयानी है? और जी हाँ, हमने 2 किस्म की बिरयानी करते हैं, चिकन बिरयानी है और एक कबाब बिरयानी हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा। तो ये सारे ही आइटम माशाल्लाह से जो हैं बहुत पॉपुलर हैं और बहुत टेस्टी हैं लोग। जी नादिर भाई, कुछ ये बताएंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है ये ताज़ा फूड बन रहा है, तो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर क्या चीज़ बनाई जा रही है? जी, आज हम यहाँ पे ये चिकन शामी कबाब बना रहे हैं। इसी शामी कबाब का ये अपना प्रोसेस होता है, पहले चिकन पूरा मैरिनेट करते हैं और उसको सब ग्राइंड करके उसकी पैटी बना ली हमने, पैटी मशीन अभी हमने बना के ये पैटीज बनाई हैं, और यहाँ से फिर इसके अंदर जो है फ्रायर में डाल के उसको पैक करके और उसको फ्रोज़न के अंदर रख देते हैं, जिसके आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश इसका टेस्ट आता है हमेशा। तो ये एक चिकन ये जो पैटीज बनाई है, इसमें कितना टाइम लगता है प्रोसेस करने में और इसको कंप्लीट होने में? इसके अंदर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, बिल्कुल इसको रॉ हम चिकन लेते हैं, इसके अंदर रॉ चिकन से उसको पहले उसको ग्राइंड करते हैं, उसमें सारे स्पाइसेस डालते हैं, उसकी फिर पैटी बनाते हैं, उसके बाद पैटी बनाने के बाद इसको फ्राई करते हैं, फिर इसको हम जो है फ्रोज़न करके और फिर पैक करते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो है ये शामी कबाब बनाए जा रहे हैं? तो शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, फ्राई करके बेचते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर पूरी फ्रेशनेस आती है? या पूरा फ्रेश होता है इसके अंदर, क्योंकि हमने खासतौर पर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने घर में बना के या रेस्टोरेंट में किया है। फूड टेक्नोलॉजी PhD होते हैं वो, जिन्होंने इनके ऊपर तजुर्बे किया है कि वी वांट टू मेक श्योर कि जब भी आप गर्म करेंगे इसको फ्रेशनेस आएगी आप। वही टेस्ट आएगा। इस तरह से अंडे लगा के बाहर इसको फ्राई करते हैं, इसे पैक करते हैं, मिक्स करते हैं, बस कि बहुत आपके लिए कन्वीनियंट, और आपको सकते हैं कि तसल्ली होनी चाहिए कि बहुत साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ है और अच्छी इंग्रीडियंट्स में पड़ेंगे। इसके अंदर ये हम जो शामी कबाब जो होते हैं उसको हम कुक करते हैं। इसके अंदर ये कम से कम 400 पाउंड के करीब जो है इसमें एक वक्त के अंदर हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें कुक भी होते रहता है और मिक्सिंग होती रहती है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये घूमते रहता है तो जलता नहीं है, और अंदर से इसमें ये है वो हीट आती रहती है, घूमते रहता है। इसमें कुक करते हैं। इसमें 2 आइटम बनाते हैं, एक तो हम जो शामी कबाब का जो है उसको कुक करते हैं, और दूसरे हम इसी के अंदर जो है वो बिरयानी जो है बिरयानी के मसाला वगैरह भी जो है हम चिकन बिरयानी भी इसमें बनाते हैं, जिसमें एक वक्त के अंदर 500-500 पाउंड हम चावल जो है बना लेते हैं। ये भी एक मशीन है, यहाँ पर भी ये डिब्बे वगैरह जो है पैकिंग के सिलसिले में इस्तेमाल की जाती है।
नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट बड़े ज़ोर शोर से जारी और सारी है और लग रहा है कि प्रोग्राम अनकरीब सोल्ड आउट होने जा रहा है और या हो चुका है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपकी खिदमत में पेश है और मैं ये बताना चलूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान ने टेक्सास में बहुत से हुनार लोगों को आगे लाने में बेइंतहा और कलीदी किरदार अदा किया है और काफ़ी लोग हमारे ऑलरेडी वहाँ पे अवार्डीज़ मौजूद हैं, जिसमें सर फहरिस्त हैं जनाब डॉक्टर हसन हाशमी और उनके साहबजादे जनाब सुलेमान, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं और टैक्सी जनरल हॉस्पिटल चला रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर मानुल्लाह खान, हसन बुखारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सफ़ीर पाकिस्तान से अवार्ड हासिल किए। इसके अलावा ऑफकोर्स फ़न एशिया के दोनों भाई जान हामिद और शारिक हामिद ने भी सफ़ीर पाकिस्तान से अवार्ड हासिल किए लॉस एंजल्स आकर, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो हमारे साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ कि सफ़ीर पाकिस्तान ने डैलस में काफ़ी अमल दखल रखा है और एक पॉजिटिव वे में। हमारा वहाँ से कोई ख़ास ये दिलचस्पी नहीं, हमारी दिलचस्पी है कि डैलस को अब एक इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाए, एक वर्ल्ड मैप पर लाया जाए, ताकि पता चले कि डैलस के लोग क्या कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान में एक रंगारंग प्रोग्राम है। ऑफकोर्स अफजल हैदर इज़ ए वेरी वेरी गुड सिंगर, राइजिंग स्टार ऑफ अमेरिका। मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा फ़नकार बन के उभरेगा। इसके अलावा दिलशाद साहब वायलिनिस्ट, जनाब निज़ामी साहब आ रहे हैं और ऑफकोर्स आदिल मुराद हैं, रीमा खान हैं, आपके जवेदिया और सऊद साहब हैं। ये सब मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम पेश करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम सबको इनवाइट करें और वहाँ आए प्रोग्राम पेश करें। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट से और कुछ लोकल हाई ऑफिशियल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। एक डांसिंग ग्रुप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, मज़ा आएगा और आप उन लोगों से मिलेंगे जो बहुत ही कामयाब तरीन है, जिसमें हमारा अवार्ड है वुमेन ऑफ द ईयर रीमा खान के लिए। इसके अलावा ऑफकोर्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स आप पहले देख चुके हैं। मैन ऑफ द ईयर सफ़ीर पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री जनाब जावेद अनवर साहब की, जो मिडलैंड टेक्सास से उनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इनकी एक कंपनी है। इसके अलावा इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिशिगन को जा रहा है इस बार, और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफकोर्स ह्यूस्टन टेक्सास को जा रहा है। तो ये बहुत सारे अवार्ड इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम इन सफ़ीर पाकिस्तान वी ब्रिंगिंग another mini debate which is taking place in Richmond, Virginia। और मैं समझता हूँ कि लग रहा है कि डिबेट की हवा चल पड़ी है। अब वो ईमेल और फ्लायर और फ़ोन कॉल से काम नहीं होगा, अब आपको सामने आकर मेंबरान के सवालत का जवाब दे होना होगा। नाज़रीन, जब जानते हैं कि डॉक्टर असद कमर साहब और उनकी फैमिली ने प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात की और ये मुलाकात बड़ी सूझबूझ रही। इस मौके पे प्रेसिडेंट एलेक्ट जनाब असद कमर साहब, जो कि बाय प्रोफेशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फ्लोरिडा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की और उन्होंने कोशिश की इस गुफ्तगू में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना को प्रमोट कर सकें, अपना को आगे बढ़ा सकें, और उन्होंने उनको अपने घर पे आने की भी दावत दी है ताकि वो एक फंड रेजिंग उनके लिए कर सकें। वो दावत भी जनाब ओबामा साहब ने कबूल कर ली है। मुझे उम्मीद है कि अपना के मेंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और फ्यूचर में ओबामा वेलकम टू द अपना समर मीटिंग इंशाल्लाह। नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वक़ीर अली खान आपसे जाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।